Hey guys, welcome back to the channel. So Sherlock Holmes The Awakened लाइव स्ट्रीमिंग आप सभी के लिए। पिछली ये स्ट्रीम अभी मैं कंटिन्यू कर रहा था बट अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो गेम प्ले को मैं फिर से शुरू करूंगा और फिर से स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा सो दैट एक कंटिन्यूटी बनी रहे। एंड मेनली जिन लोगों ने शर्लॉक होम्स की मूवी देखी है, नॉवेल्स पढ़ी है, उनको पता है ऑलरेडी बहुत बड़ा डिटेक्टिव है, राइट। एंड एलन नॉयर वो भी एक डिटेक्टिव बेस्ड गेम है, राइट। बहुत अच्छा है, बहुत सस्पेंस है उस गेम में एक्चुअली। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद ऐसा कुछ इसमें भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेस स्पेस, सो बेसिकली ओवर रिटर्न करने का ऑप्शन है। लेट्स सी, कम ऑन, यस। सो शर्लॉक होम और उसका दोस्त डॉक्टर वॉटसन एंड चैप्टर 1 द शैडो ओवर लंदन। सो एक बात तो क्लियर है कि ये गेम चैप्टर वाइज है मेनली। वैसे देखा जाए इन चैप्टर्स को रेगुलर अपलोड करने में बड़ा मजा आता है। जिनके लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं, जो ओपन वर्ल्ड होता है, उनकी स्ट्रीमिंग का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। Dr. Watson, would you kindly close the door behind you so that we can limit the price of your carelessness to merely hours of work rather than days? My apologies, Mr. Holmes. I found myself rather taken aback. I saw tidier houses in war-torn Afghanistan. Are those my surgical needles? So यहाँ पे सारा सामान डॉक्टर वॉटसन का ही यूज कर रहा है शेरलॉक। Was that my son? Let's see. Plainly not, for I was the one who ate it. I set it aside for this evening. And for that I am grateful. Is that my bed? वाह, उसके बेड पे ही खड़े होके ये लिटरली जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अपने किसी केस की तैयारी कर रहा है। Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers In a are here bed. on the table. And obviously उस बेड के ऊपर चढ़ के वो अपने केस की तैयारी कर रहा है। Let us see what the postman brought today. This mess is getting out of hand. What will the landlady think? Okay. So let's see. Okay, so newspaper से basically मुझे 3 एक्टिविटी कवर करनी है। वाह, इंग्लैंड एंड स्वीडन के बीच ये बहुत बढ़िया है यार। Local gossip, all of it uninteresting. Okay, लंदन एडवर्टाइजर, ठीक है। And this is what? Visit Barn. Your order from Barnes Bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service. Yes, good service तो है, but why? वो घर तक आके क्यों डिलीवर कर रहा है? Another letter from Werner. I Werner? never reply, but they keep coming. क्या हार बनाया यार? इस हार का कोई मैच ही नहीं है एक्चुअली। I don't see the strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything which the mind of man can invent. Well, life used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. I have just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Okay, so डस्टबिन में से ये स्ट्रैंड को ढूंढने जाएंगे। बट वो स्ट्रैंड इतना जरूरी क्यों है? मेरा कोट कहाँ है भाई? नहीं, मेरा कोट नहीं है। थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा। राइट, बारिश का मौसम है। वेयर इज द कोट? हैट मैं ये वाली पहनूंगा। Whoa. And I think this one? नहीं, ये नहीं, ये ठीक है। But cap, right. Let's see. अब आगे क्या मिलेगा? So 221B Baker Street. ये रहा डस्टबिन, और डस्टबिन में स्ट्रैंड बेसिकली पड़ा रहेगा। Because उसको कोई कलेक्ट नहीं करा, ये हमें पता चल गया था। And when laced with poison, the perfect assassination tool. What else? और कुछ है? Yes.
You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. See, Watson? The conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Get the Strand. Get your copy of the Strand here. Okay, इससे strand लेते हैं तभी कुछ पता Sorry, चलेगा. Mr. Holmes. I just sold my last paper. Blast. Then why are you still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on around here? Nothing gets past me, mister. Obviously. Tell me. did you स्ट्रीट notice पे anything यही तो बेस्ट suspicious पार्ट at होता my है कि door स्ट्रीट this के जो morning? लोकल वेंडर्स होते हैं वो सब Like the चीज man with ऑब्जर्व your करते रहते हैं. newspaper. Precisely. What do you know? I know the value of a shilling. Dr. Watson? बिना पैसे के कुछ Cool, नहीं now बताएगा. I can take the day off. Can you describe the man you saw? He was carrying a lot of books. Up to his chin they were. Never heard of a well-read assassin. Looks can deceive. Hence the appeal of disguises. Which way did he go? Not sure. Obviously I ये was सोचने distracted वाली by बात है जो बच्चे ने customers. बताया कि Sorry. वो जो भी बंदा था वो बुक्स लेके आ रखा था. इतना पढ़ा लिखा असैसिन तो कभी होता नहीं है. Nah, Right. not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could Merchandise. see was him kneeling at your door. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears, if you have more shillings. Yes, अगर शिलिंग्स नहीं है कोई मतलब नहीं है. Okay. So ये एक और चीज है. माइंड पैलेस जहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं. Who ruined the stands? Okay. What else? ये क्या है? ये ग्रीन वाला क्या है यार? Observation. Stand is missing. ठीक है. बच्चे ने जो बताया. Let's see. Right. So Barnes, the local newspaper. Sorry, local bookshop. Book sellers. उसने stands को destroy किया है. Answer मिल गया. Let's go back. Come now, Mr. Holmes. Murder? Get the Yes, Strand. Barnes has Get his Oh, your come on, copy of man. the Strand Seriously? here. scruples. इतना बड़ा वो नहीं लगा Every सकता pawn मैं. knows it's part of a पूरी की game. पूरी स्क्रीन कवर हो जाती है. Now what? Do you Chalo, even buddy. have Get the enemies Strand. that would want Get to your kill copy you? of the Strand here. Okay, perhaps from Cordona. So अभी हमें मिस्टर बार्न्स की बुक शॉप पे जाना है. एंड पता करना है कि एक्चुअली इसकी इन्वॉल्वमेंट क्या थी ऐसी. यार एक ही गड़बड़ की इन्होंने. कोई छोटा मिनी मैप बना के नहीं दिया. बुक शॉप तो मुझे दिख गई एक्चुअली, बट एक मिनी मैप होना चाहिए था. एटलीस्ट उससे आइडिया मिल जाता मुझे. How about that Vogel fellow? He seems rather obsessed with you. Would he do something like this? कौन ये वॉटसन है? और यहाँ पे कहीं डॉग है. बस मुझे आवाज आ रही है डॉग के हाफने की एक्चुअली. ऑब्जर्व. ओके. ऑब्जर्व वाला फंडा मुझे बड़ा अच्छा लगा. Leans heavily on his right leg. Okay, ये बात तो समझ में आई. एंड यहाँ पे क्या है जूतों के ऊपर? High heels. Wants to look taller, but क्यों? The large bag limbs result of an attack. He was very high. Deter future violence. System has been threatened by someone. Plot against me. Yes. वर्कॉलिक है ये तो है. Except. Mr. Barnes? A word. Yes. अब देखते हैं मिस्टर बार्न्स क्या बताएगा एक्चुअली. Oh, for goodness sake. Come on, don't tell me कि वो दौड़ गया है यहाँ से. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please? Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would Seriously? you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. How about Deep in the weed with the work. reschedule in a month or two? Come now, Mr. Barnes. 2 महीने का Only टाइम take अगर a तुम किसी moment. को दोगे, obviously वो भी Really डिटेक्टिव deep को. in the weeds with
with Doesn't important work. things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. कुछ तो छुपा रहा है Why वो. is he acting this way? You're asking the right questions, Doctor. Let's find a way to coax him out. Z. यार ये dog कहाँ पे है? Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. The ladder is broken recently, judging by the freshness of the wood. Okay, so लकड़ी अभी बहुत जल्दी में टूटी है, ये पता चल गया. Let's see. अच्छा डॉग ये रहा, मैं कह रहा हूँ So, कि Barnes has a dog now. Who's डॉग a कहीं good तो boy? है. Okay. So जिसके लिए हम ईगल आई वाला कॉन्सेप्ट के लिए हम वेट कर रहे थे, वो ये रही. I could hardly imagine anything more macabre. एक और यहाँ पे बुक के ऊपर भी था. Come on, give me something good, man. न्यूज़पेपर के अंदर क्या है? नहीं, आई थिंक ये स्ट्रैंड है. नहीं, कैटलॉग एक्सोटिक प्लांट्स. ओके, सो जो कैक्टस की स्पाइन जिसपे पॉइजन लगा हुआ था और जिसके थ्रू शेरलॉक को मारने की कोशिश की थी, मे बी शायद उसी के लिए बांस ने ये बुक अरेंज की है. नाउ मेरे पास अभी एक एविडेंस और है. ओके, इनमें क्या है? Basics of cryptoanalysis, cryptography in Egypt. It appears Barnes has an interesting hobby. क्रिप्टोलॉजी की बुक क्यों है उसके पास? ये क्वेश्चन खतरनाक है थोड़ा सा. ओह मैन, बहुत कुछ है यार सर्च करने के लिए यहाँ. ओके, और ये शायद वही बुक्स है. Improvised stand, but it does make the flowers more visible. बट ऐसा क्यों? In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. बट यहाँ पे डेड फ्लावर्स अभी तक रिप्लेस नहीं हुए. Where is the... Come on. Oh yes. Come on, come on. The finest view London has to offer. So ये 3 क्लू मिले यहाँ से, बट इन 3 क्लू से मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया. What else? और क्या है मेरे पास सराउंडिंग में चेक करने के लिए? सब कुछ चेक किया मैंने. I think ये मुझे अंदर आने दे तो ही भला ये. Apologies, but I can't hear you. Please come back later. नहीं, I don't think ये मुझे अंदर आने देगा. Okay, never mind. We're looking for a cactus needle in a haystack. A spine in a book stack? No, come on, Watson, think. I think बाहर जाके ही पता चलेगा कुछ. Involvement. Oh, I think flowers. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned for making a racket. मुझे क्यों फील हो रहा है कि शायद इस लेडी से कुछ पता चल जाए. The weather is dreary, isn't it? To be fair, my flowers could use the rainfall. Hello there. What's your name? Lily, I know, not very original. लिली. डॉगी का I नाम should have लिली. worn something warmer. इसको ठंड भी लग रही है. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? I think यहाँ से कुछ मिलना चाहिए. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine so. I merely sell. Oh, यही है वो चीज. ये देखो. The pot is damaged. The blow was severe but softened by something. मुझे लग रहा है यहीं से वो कैक्टस लिया गया था. ये तो हो चुका भाई. अब कुछ और उठाने की बारी है. नो 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 नो. कुछ तो रह गया है. यस, Familiar spine? Is this what I Yes. found in my dustbin? यही स्पाइन था वो मेनली. सुभांश ने बेसिकली अपने ठीक Anything ऑफिस के tickle your सामने से fancy, Mr. Holmes? इस फ्लावर शॉप से वो स्पाइन निकाला था. बट अब ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ये लेडी उसके साथ मिली है या नहीं. ओके, ब्यूटी या कंसीलमेंट. ठीक है, लेट्स सी. मॉर्निंग ब्रूच.
ओके, ऑनरिंग डिजीज हस्बैंड, ठीक है। गले के पास क्या है भाई? लग्जरी फैब्रिक। यहाँ पे थोड़ा सा केस मुझे लग रहा है डाउट में। अब आई कांटेक्ट नहीं बना रही। लेट्स सी जूतों पे कुछ मिलेगा। क्लीन बूट्स, स्टिल ग्रीविंग, रेडी टू मूव ऑन। ठीक है, ये ऑप्शंस मिल गए, बट इसके साथ अब क्या करें? स्टिल रीडिंग फ्रॉम अ ट्रेजिक लॉस, ठीक है। Okay, so basically इसका husband. Mr. Holmes? Your husband's death. You're clearly still in mourning. Oh no. I loved him more than anything, of course, but that was some time ago now. Life goes on. A lesson we all learn, one way or One another. way or another. वैसे इसको एविडेंस देने का कोई फायदा नहीं है, but still let's try. बट कैक्टस से इसको कुछ नहीं पता चलेगा यार। डेड फ्लावर्स ऑन डिस्प्ले, एक्सोटिक प्लांट कैटलॉग। आई डोंट थिंक इसका इन्वॉल्वमेंट है इसके साथ इसको इंक्लूड करना मतलब रिस्क पे हो जाता। नाउ व्हाट? लीव मैन। I'll be off. What else? ये एक थोड़ा सा जंजाल हो गया। अब मुझे ओके, ये भी कोई है बंदा। Come on यार, ये मेरा दोस्त है। I am plain sight, but where is the plain sight? ऐसा तो नहीं है लेडी का कोई इन्वॉल्वमेंट है। इसको एविडेंस प्रोवाइड ही करके देखता हूँ। One of these things is not like the other. Oh yes, The फ्लावर्स cactus. के बीच में Those fearsome कैक्टस। spines can prove a devil to remove, and the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them. The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. ओके, तो उसने एटलीस्ट ये तो कबूल किया कि ये कैक्टस कहाँ से आया उसको नहीं पता है। What else? Brook from Barnes. Under his eye the result. Okay, ये Barnes के बारे में है। ये बेसिकली ये है roses of various color। यार ये थोड़ा सा dead flowers on display। इसको What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I'd follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Okay, let's see I don't know anything about this, sorry. what क्रिप्टोलॉजी। ये तो मुझे लग रहा है शायद इससे ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था मुझे। एन एक्सोटिक प्लांट कैटलॉग, ठीक है, लेट्स सी। I'll be off. यहाँ से निकलते हैं अब। कम ऑन, इसने मुझे अब अलाउ करना चाहिए बिकॉज मुझे इससे लिटरली बात करनी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा ये समझना कि बांस के मन में चल क्या रहा है। नहीं, बांस ने अभी भी दरवाजा नहीं Didn't you खोला। once tell me that answers usually lie in plain sight? Come on, how plain sight, man?
एक ही चीज को ये बार-बार रिपीट करेगा तो मेरे लिए आंसर्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? ओके, फिर से बाहर आते हैं। इसी को पूछना पड़ेगा, इसी के पास कुछ ना कुछ एविडेंस तो होंगे। एक्सोटिक। I don't know anything about this, sorry. I don't know anything about this, sorry. I don't know anything about this, sorry. What? Come on, ये तो गड़बड़ हो रही है भाई। इसको सच में कुछ नहीं पता है। Let's see. यहाँ किसी को कुछ आइडिया हो? Impressive stature, strong gaze. I think this man deserves a knighthood. Really, Holmes? How can you be so sure? On rare occasions, Watson, it can suffice to trust one's gut. Come on, let's see. बैक एरिया में क्या है? बैक एरिया में बेसिकली बंदे छुपे बैठे हैं और यहाँ पे कोई काम नहीं है, देख रहे हो? कॉबलर। ये गली इन्होंने बंद करके रखी है बेसिकली। इससे आइडिया मिलेगा कि मुझे इस तरफ तो नहीं जाना है। मैं कहीं तो फंस गया हूँ। इसी के ऊपर येलो आ रहा है, मुझे लग रहा है कोई ऐसा एविडेंस है जो इसको दिखाना जरूरी है। Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. माँ, Are you sure you're asking the right person? Come on, मैं I'm से just a सारे flower ही seller. पूछ लूँगा। I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. I don't know anything about this, sorry. Come on. I don't know anything about See? this, sorry. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Oh, Are you familiar with Mr. Barnes? Yes. ये क्वेश्चन No, मुझे not पूछना चाहिए था really. सीरियसली। Well, बार्न्स in के a बारे way. में, What बट मैंने on सब earth कुछ does पूछ that लिया mean? इससे। I know who he is, of course, but we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk in the park with my dog, and most days I spot Oh, Mr. Barnes इसलिए out मिस्टर with his बार्न्स new ने नया puppy. डॉग खरीदा है। So we see each other. Actually, we once met briefly while our dogs played. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Mrs. Fleming on Barnes. I think इसके पार्ट्स खत्म हो गए शायद। Let me try once again. अंदर कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैं थक चुका हूँ यहाँ अंदर बाहर करते करते। So, Barnes has a dog now. Who's a good boy? Come on, ये डोर नहीं खोलेगा यार। Now. Didn't you once tell me that answers usually lie in वो plain लेडी के sight? साथ क्वेश्चन आंसर मुझे लग रहा है अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। बहुत ही बैक एंड फोर्थ हो रहा है। Yes. People don't tend to come out for flowers when it rains. Perhaps I should try selling door to door. Have a look at my flowers. They will not bite unless you touch their thorns. Come on, ये बंदा देगा आप कुछ नहीं। Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Come on, what's wrong, man? Have a look at my flowers. They will not bite unless you touch their thorns. कुछ तो मिस कर रहा हूँ मैं। ये क्लू वाला गेम है लेकिन बहुत ही टेढ़ी खीर होता जा रहा है मेरे लिए अब। बिकॉज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए जहाँ से मुझे शायद कुछ आइडिया मिल जाए। Nope, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ नहीं है। Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? Let's see. ओके नहीं इसके पास है तो सही बट मुझे लग रहा है कि शायद मैंने एविडेंस खराब ना कर दिया। Have a look at my flowers. They will not bite unless you touch their thorns. वो Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? यार ये गड़बड़ हो गई। ये बेकर स्ट्रीट है, ये बार्न शॉप है।
Oh, why Ban is acting so strangely? तो ये क्वेश्चन अभी दिमाग में चल रहा है और इसका आंसर ढूंढने की जरूरत है. Ban's broken letter, cryptology, book at Ban's, cactus in a crock. Okay, potentially poison. एक ये लगता है, एक no. अच्छा तो तीनों का है. Exotic plants ठीक है. Now observation. Observation में strand missing नहीं. Mrs. Fleming. Dead flower. Okay, let's see. अब तीसरी चीज. Documents. New boys. Come on, एक भी. Okay. So at least गलत होता है. तो ये ऑप्शंस देता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके. ओह, ये हर जगह है यार. Let's see. Okay, so एक तो मिला है एटलीस्ट. Strand missing, leave it. नहीं, ये नहीं है. Come on, man. मेरे बस की बात नहीं है, लिटरली. एक ही है अभी. देखो मैं सिर्फ एक ब्लफ मार रहा हूँ. मैं भी शायद कनेक्ट हो जाए. I don't know. दो हो गए. अब फाइनली तीसरा वेयर रह गया. रोज फॉर सेल, मे बी और मे बी नॉट. नो. सो अब इसमें है बुक फ्रॉम बार्न्स. आई थिंक ये कनेक्ट होना चाहिए. नो. अब एक ही चीज रह गई है. अब वो भी नहीं हुई तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है. ये तो क्लियर है कि वो इस लेडी को पसंद करता है. एंड आई थिंक उस लेडी के थ्रू ही मुझे आइडिया मिल सकता है. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair. Did it? I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. So ये चीज तो हमने फिलहाल बता दी. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. आज का दिन Rest थोड़ा सा assured, we डाउटफुल are लग not रहा है यार. interested in disclosing your personal affairs इंटरनेट to में anyone, कुछ तो इशू हो रहा है. including टेक्निकल Mrs. इशू के Fleming. कारण बहुत Please ड्रॉप come हो रहा है. out. एंड आई थिंक इतना सुनने के बाद बांस बाहर आएगा. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. Okay. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. इसको नोटिस तो किया है. I know what to do. I have neither the experience nor the But interest उसने in किया है इसको navigating the notice. finer sex and their peculiarities. Do what you will. Oh, right. Yes, of course. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. So basically best part ये हुआ कि इसके पास सारे मैगजीन्स के आप कह सकते हो सब्सक्रिप्शन थे
तो उसके पास से वो कॉपी मिल जाएगी जो इसने शेरलॉक की बर्बाद की थी. Local at the port of London had a rude awakening last night with a loud bang and thick red smoke. Okay. Come, Dr. I Watson. don't think इसको पूरा Let us पढ़ने की put this जरूरत है. matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Let me know if there's any way I can make it up to you. Tell you what, tomorrow's edition of The Strand is on me. क्या फ्री में देने वाला है? Let's go. I'm sure Barnes has had enough of our meddling, Mr. Holmes. We best be off. Yes, it's better to go now. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill-applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news Yes, from so earlier. basically Sherlock के साथ I think I have a साथ case ऐसा कई for बार you, होता a है real one. कि जब वो Truly. अपने केस में Indeed. लगता है तो वो बाकी सब Perhaps चीजों को not भूल as जाता है. thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Okay, so नया केस हमारे पास है. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But It's brilliant. Let's go. Okay, so जो good. नया केस है वो basically Well, हम his उसमें house हमें एक is nearby. Come. गुम हुए बच्चे को ढूंढना है. New reward unlocked. Stenwick is just down the street from Barnes's bookshop. Let's go. I hope यहीं आसपास होना चाहिए. Not much further now. Okay, ये guidance तो दे रहा है, but I don't know. Maybe ये, yeah, Stanwick Manor. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Seriously. Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. भाई साहब जबरदस्त हो रही है बेइज्जती यहाँ पुलिस वाले की. Other, I want to investigate. Okay, ये दो चीजें बहुत जरूरी है. और कौन मिस हुआ है और ये investigate क्यों नहीं कर रहा Why है? has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. ये बहुत गलत approach है actually. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony, then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Right. Right. So first thing, Fire servant के बारे में जानना जरूरी है. Then only हम पता कर पाएंगे कि वो गया कहाँ है. Describe कब गया और कहाँ Tell me गया. about Kimahir. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man New you've ever Zealand. seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I... बता रहा है जैसे इसके नाम पे property खड़ी कर दी है. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside. Okay. Everything seemed normal at a glance. ये तो behavior है आप देख रहे हो. Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat.
cabbage, seriously? I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause... This investigation scene is found. Why are you still here? बंदे का एरिया बेसिकली इसके सर्वेंट को ढूंढना है, राइट? और थोड़ा टीडियस सा टास्क रहेगा और आई थिंक थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, बट गाइस आज के लिए बस मैं आज की स्ट्रीमिंग को अनफॉर्चुनेटली यहीं स्टॉप करते हैं बिकॉज टेक्निकल इशू काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। जो स्ट्रीमिंग अपलोड हो रही है वो बहुत फ्रिक्वेंटली डिस्कनेक्ट हो रही है, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स आ रहा है, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेक श्योर टू कम बैक अगेन बिकॉज डिटेक्टिव वाला गेम है, थोड़ा सा हट के है, जीनियर जो है थोड़ा सा अलग है, यूनिक है, बट स्टिल विल ट्राई टू एंजॉय इट और सीन्स को गो थ्रू करने के बाद केसेस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट? सो गेम प्लेस देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टिल द टाइम, बाय बाय।